Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Good evening and welcome to the Wednesday edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. My name is Rajesh Lake and with me is my co-anchor in Hindi, Manoj Pathak. नमस्कार, मार्केट मंत्र के ताजा अंक में आपका स्वागत है। आधे घंटे के इस कार्यक्रम में हमेशा की तरह हम देश और दुनिया की चुनी हुई कारोबारी, आर्थिक और शेयर बाजार से संबंधित ताजा खबरों को लेकर हाजिर हैं। हमारे साथ खबरों पर चर्चा के लिए स्टूडियो में आमंत्रित हैं बिजनेस स्टैंडर्ड के एडिटोरियल डायरेक्टर एके भट्टाचार्य। एके भी कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार। थैंक यू। आइए शुरुआत करते हैं अंग्रेजी में हेडलाइंस से, जिसे लेकर मौजूद हैं राजेश लेख। At the stock markets, rising for the third straight day, Sensex gains 124 points, Nifty adds 43 points. Country's money laundering laws to be applied on trade in cryptocurrencies, says the government. And slowdown in India's economic activity will be temporary, says Moody's Analytics. घरेलू शेयर बाजार में लगातार तीसरे सत्र में लिवाली, सेंसेक्स 124 अंक उछला, निफ्टी 43 अंक ऊपर आया। सरकार ने कहा क्रिप्टो करेंसी के कारोबार पर देश का धन शोधन कानून लागू किया जाएगा और मूडीज एनालिटिक्स ने कहा अस्थायी रहेगी भारत में आर्थिक गतिविधियों में गिरावट। घरेलू शेयर बाजार में लगातार तीसरे सत्र में आज निवेशकों ने लिवाली की। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स कारोबार के अंत में 124 अंक यानी 0.2% बढ़कर 60,348 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 43 अंक यानी 0.2% उछलकर 17,754 दर्ज हुआ। विस्तारित बाजार की ओर चलें तो छोटी और मझोली कंपनियों का प्रदर्शन आज सेंसेक्स और निफ्टी पैक की तुलना में थोड़ा सा बेहतर दिखा। बीएसई मिड कैप इंडेक्स में 0.6% की वृद्धि हुई, जबकि स्मॉल कैप इंडेक्स 0.3% बढ़कर बंद हुआ। The stock markets rising for the third straight day. The Sensex of the Bombay Stock Exchange gained 124 points or 0.2% to close at 60,348 today. The Nifty at the National Stock Exchange rose 43 points or 0.2% to 17,754. In the broader market, the BSE Mid-Cap Index added 0.6% and the Small Cap Index inched up 0.3%. Among the sectoral indices on the BSE, the Utilities Index was the leading gainer, jumping 1.9%. The Power Index advanced 1.8%. The Services Index added 1.6%. The Capital Goods Index climbed 1.2%. The Industrial Index rose 1.1%. The Auto Index gained 1%. The Oil and Gas Index moved up 0.8%. The Energy Index added 0.7%. The FMCG and the Commodities Index gained 0.5% each, and the BankX Index inched up 0.4%. Among the declining indices, the Realty Index lost 0.5%, and the IT, the Healthcare, the Consumer Durables, the Metal and the Tech indices fell 0.4% each. एक भी बाजार में लगातार पिछले 3 सत्रों से हम तेजी का रुख देख रहे हैं। इस तेजी के पीछे कह लें कि मुख्य कारक क्या लग रहा है आपको? ये जो 3 दिन से हम देख रहे हैं वो एक हम कह सकते हैं एक ब्रॉड बेस्ड रैली है। थोड़ा बहुत जो 3 दिन के पहले जो मार्केट को झटका लगा था उसका भी एक आप समझ सकते हैं एक रिवर्स करेक्शन है। और दूसरी बात मैं कहूंगा कि जो कॉर्पोरेट रिजल्ट्स जो अभी तक आए हैं उसमें काफी उम्मीद की किरणें नजर आ रही हैं। दो मैं बिंदुओं के ऊपर रोशनी डालूंगा। पहली बात तो है कि जो कंजम्पशन कंपनीज जो हैं, जो कंजम्पशन स्टॉक्स जो हैं
उनकी सेल्स अगर आप देखें, वो सेल्स इस पिछले तिमाही में जो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर की जो तिमाही थी उसमें बढ़िया हुई है। और ये कंपनियों ने, ये 3000 कंपनी ने जिन्होंने अभी तक रिजल्ट निकाली हैं, उनकी जो इन्वेस्टमेंट जो है वो भी बढ़ी है। तो अगर आप दोनों देखें, कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट दोनों में ही एक पॉजिटिव इंडिकेशन आ रहा है। और मैं समझता हूं ये स्टॉक मार्केट उसको पकड़ने की कोशिश कर रहा है कि वो एक सिग्नल है उसके लिए। अगर आप देखें मेटल्स, थोड़ी बहुत आईटी और कंस्ट्रक्शन सेक्टर में थोड़ी बहुत नरमी है, और बाकी सारे सेक्टर में ये एक ब्रॉड बेस्ड रिकवरी जो हम देख रहे हैं। और तीसरी बात कि जो मैं कहूंगा वो है कि पिछले दिनों अदानी के स्टॉक्स में काफी एक सेंटिमेंट का इम्पैक्ट काफी आया था। और पिछले 1-2 दिन में हमने देखा कि उन्होंने ना ही बाहर से और भी पैसा उन्होंने बटोरा, और उस पैसे से उन्होंने अपने जो लोन्स जो थे, पेपर्स जो रिपे करने थे, उन्होंने प्रीपे कर दिए हैं। और उनका अभी एक ऐलान आया है कि वो सारे जो उनके पेपर्स जो हैं, जो शेयर्स के अगेंस्ट लिए गए थे, उनको वो प्रीपे कर देंगे। तो उससे भी जो स्टॉक मार्केट में एक कॉन्फिडेंस सा थोड़ा आया है। तो ये तीनों मैं समझता हूं कि प्रधान कारण है जिसके लिए आज आप तीसरे दिन कंटिन्यूअसली स्टॉक मार्केट में रैली देखिए आप। सो you just mentioned about IT not doing so well. So a comparison of change in revenue growth expectations for IT firms and the top clients in FY24 versus FY23 suggests that the companies are at a greater risk of negative surprises in FY24 growth. So therefore, how do you see the future of the IT sector? Well, the IT sector is going through some sort of an adjustment challenge in a post-COVID scenario. As you would recall, like all global IT companies and also Indian IT companies, Indian IT companies were less enthusiastic, less robust in their optimistic scenario building. But I think the international companies were very robust in their estimates. So they went out of their way on hiring, on projecting demand forecast, as if COVID will going to continue for the rest of their lives. Okay. Now, Indian companies also suffered from that hubris, in my view, and I think what you are seeing in the stock market is a reflection of how the Indian IT sector, Indian IT companies are adjusting to the new reality of a post-COVID world, where the importance or the emphasis that is given to contactless IT services is now less, and therefore some sort of readjustment of hiring is taking place. Earnings estimates are being revised, in many cases downwards. Competition is hotting up. So all these things are actually impacting the outlook scenario for the IT sector. And how much role is the rupee playing in all this? Rupee, I would say, is actually should help the IT sector, because many of their exports will probably get them better rupee earnings. But remember, most IT companies are now globally interlinked, and the global integration is very high for the Indian IT companies. So a weakening rupee also hurts them because of the global integration. Okay. Now, today the global market has fallen back into the grip of uncertainty as the Fed chief signaled the possibility of a prolonged and faster rate hike, contradicting a dovish comment made by another Fed official last week. So, my question, I think I have asked you a few weeks back also the same question I'm asking you again. Has the market not factored this fact? The market has been in the know of this fact, because to quote Mr. Powell, he keeps saying that we will stay at it until the job is done. Markets operate in a very dynamic situation, and they latch on to every statement that is made yesterday, today, and tomorrow.
what is happening right now is a market, not a turmoil, but a response to Mr. Powell's statement to the senators. And I think three key things are to be kept in mind. One is that the jobs data will be released this Friday, and I think an unemployment rate of 3.1%, which is a very good unemployment rate, and the wages are still very tight. So that indication will be available to Mr. Powell and the Fed Reserve Committee from that data. Soften his stand? Probably it might. And then comes the inflation data, which, as you know, the inflation is around 6.4% or so from the U.S. It is still slightly lower than what it was in January, but nowhere near what the target of 2%. Even you would take the annual average is 3.4%. So Mr. Powell would continue to have it. And so therefore, on 21st, 22nd, when the Fed is meeting, it will be influenced by that. Till that time, I would say these statements here and there will keep troubling the market this way or that way. Can I say till that time volatility will continue? Absolutely. You plucked those words out of my mouth. Volatility will continue. एक भी यहाँ पर ये कह लें कि ध्यान देने वाली बात है कि एक और मुद्रास्फीति अपने काफी उच्च स्तर पर है, दूसरी ओर रोजगार संबंधी जो आंकड़े हैं वो बता रहे हैं कि नहीं, रोजगार की यानी अच्छे आंकड़े हैं, तो यह विसंगति क्यों है? नहीं, देखिए, ये अर्थनीति का एक अद्भुत ही कही है आप, एक नीति है, और ये नीतिगत एक डायलेमा कह सकते हैं आप। जी जी, वही मैंने कहा कि डायलेमा है एक। ये है कि अगर आप इन्फ्लेशन को फाइट कर रहे हैं, अगर सेंट्रल बैंक अगर इन्फ्लेशन को फाइट कर रहा है, तो उस वक्त वो हर ऐसी चीज जिससे कि इन्फ्लेशन बढ़ सकती है उसके ऊपर बहुत तीखी नजर से देखेगा, और इसीलिए वो अनएम्प्लॉयमेंट रेट, जो कि एक अच्छी इंडिकेशन है, वेजेस एक टाइट सिचुएशन अच्छी है, वो भी उसके लिए। तो मैं समझता हूं कि सेंट्रल बैंक का प्रधान उत्तरदायित्व ये है कि किस तरह से मुद्रास्फीति के ऊपर रोक थामा जाए, और ये छोटी मोटी रोक नहीं है, ये टारगेट है 2% और उनका करंट रेट है 6.4%। सो ये एक बहुत बड़ा एक उत्तरदायित्व है। कब कैसे होगा? पिछले जो फेड के जो 1980 में जो वॉलकर के जमाने में ऐसा एक दौर आया था, उसके बाद अमेरिका अर्थनीति को ऐसा दौर कभी समझ नहीं आया। तो मुझे लगता है कि बहुत ही एक दिलचस्प एक मौका नजरिया हमें चीज हमें देखने को आएगा अगले 6 महीने तक। So what is also very important is a strong recovery that was seen today in the market, and it was seen in the domestic market towards the end of the day, which kept the bulls on the move. So my question to you is that a new front is getting opened up in India, where the domestic market, the domestic players are playing a major role and taking the hit wherever and contributing towards the market. So the role of the domestic investor is crucial. Yeah, absolutely. I think the domestic market is today responding to the domestic economy's impulses far more substantively, far more comprehensively than it was happening some time back. So whether it is a question of whether growth momentum will be sustained or not, that's something the market is closely tracking. What the market has not tracked today is a sudden inversion in the yield rate. Today the yields, the bond yields, have inverted for the first time since 2015. Now, which means that, does it indicate a slowdown in the economy in the coming months? So the market probably will respond to this inversion of the bond yields maybe tomorrow. एक भी यहाँ पर हम आम कह लें जो हमारे श्रोता हैं उनकी दृष्टि से समझना चाहेंगे कि बाजार में जो अभी स्थितियां हैं और जो उपलब्ध कह लें अवसर हैं, वैसे में कौन कौन से सेक्टर, प्रमुख 3 सेक्टर आपको दिख रहे हैं जो लगभग 2 साल की अवधि में, जहां यदि कोई जाए तो उसे नुकसान नहीं होगा, और अगले 1-2 वर्षों में, क्योंकि जो कोविड का दौर था वह अब अपने अंतिम चरण हम कह सकते हैं, क्योंकि उसका लहर वाली बात अब कहीं उठती दिख नहीं रहे, तो ऐसे में
कौन से 3 सेक्टर दिख रहे हैं? देखिए, जो कंजम्पशन स्टॉक्स जो हैं वो मैं समझता हूं कि स्पेशली जो पिछली तिमाही के जो रिजल्ट्स को देखते हुए मैं कह सकता हूं कि कंजम्पशन स्टॉक्स और जो सेक्टर्स कैपिटल गुड्स के साथ जुड़े हुए हैं उनको तो हम साफ कह सकते हैं कि उनकी जो ट्रैजेक्टरी होगी वो पॉजिटिव टेरिटरी में जानी चाहिए। और उसके साथ साथ जो एविएशन कहिए, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर कहिए, ये सारे सेक्टर्स में भी काफी दम रहेगा और हम ये कह सकते हैं। पर अगर आप आईटी सेक्टर की बात कहें या मेटल्स की बात कहें, वो शायद अभी भी नरमी बनी रहेगी। I was going through the U.S. Markets and all that. The Fed, it came to be that the Fed has not managed inflation as a problem in the last 40 years. So is this lack of experience or at the Fed's end, and also they do not know what will bring it back to well, you know, I know that you are right. That's what the commentary seems to be. But also note that inflation rate has come down, although very, very slowly, from around 9% at one point in time to 6%. So it may not reach very easily to the 2% target, but you know, it's like an aspirational target to have that. You know, you need to bring inflation down to 2%. But with this kind of job data, I think Mr. Powell and the Fed Reserve has a real tough task ahead. By when they can achieve that target, I don't know. Okay, and so what does the equity investor do at this point of time, given that what should be his best strategy on a tactical basis and also in respect to funds and portfolios? In the domestic market, yeah. I would say that go in for those 2 or 3 sectors that we just now mentioned. Manojji, I spoke to Manojji about it, that some of the sectors that are still holding on, consumption sector, capital goods, okay. That's one. And number 2, if you want to apportion your investable resources, debt probably is one area, and we don't often talk about debt in this program, but debt as a category is I think is coming back to life after the current interest rate trajectory and that we have seen. It's a Women's Day today, and what is your advice to women listeners or entrepreneurs or investors? Well, I think it is not just to women, but I think for the entire Indian economy, those who manage the Indian economy, is very, very important to increase the participation of women in Indian workforce. Today, it is abysmally low, and no country can hope to reach the highs of economic growth and prosperity with a low women's participation rate in the workforce. So therefore, I would say we should do our best to make sure that more women work in the economy, in not only at home but also in workplaces. Well said. बिल्कुल, यानी महिलाओं की भागीदारी बढ़े। वस्तुतः जिसका पारिश्रमिक उन्हें मिले, भागीदारी तो भी है लेकिन उसका पारिश्रमिक उन्हें नहीं मिल रहा, तो वो पारिश्रमिक मिलना शुरू हो, उस दिशा में यह देश आगे बढ़ सके। आइए अब चलें वैश्विक बाजारों की ओर। सबसे पहले एशियाई शेयर बाजार, जहां आज कुल मिलाकर बिकवाली मुख्य रूप से दिखी है। अमेरिका में केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व के प्रमुख जेरोम पॉवेल द्वारा मुद्रास्फीति नियंत्रण के लिए ब्याज दर में बढ़ोतरी की संभावना संबंधी संकेत दिए जाने का आज एशियाई बाजार पर असर दिखा और बिकवाली मुख्य रूप से की गई। सिंगापुर का स्ट्रेट्स टाइम्स इंडेक्स बिकवाली के दबाव में 0.6% नीचे आ गया। चीन के शंघाई कंपोजिट इंडेक्स में 0.1% की नरमी आई। हांगकांग का हिंगसेंग 2.4% की बड़ी गिरावट के साथ बंद हुआ। उधर दक्षिण कोरिया के कोस्पी में 1.3% की कमी देखने को मिली। वहीं निवेशकों की लिवाली से सक्रिय भागीदारी से जापान का निक्केई 225 सूचकांक 0.5% ऊपर आ गया। यूरोपीय शेयर बाजार की ओर चलें तो समाचार तैयार किए जाने तक वहां नरमी दिख रही थी। अंतर्दिवसीय कारोबार में लंदन का FTSE 100 और फ्रांस का CAC 40 दोनों 0.3% नीचे चल रहे थे।
जर्मनी का डेक्स बिना किसी उतार चढ़ाव के अपने पूर्व स्तर के आसपास बना हुआ था। On the Wall Street, key indices ended sharply lower yesterday after Federal Reserve Chair Jeremy Powell told Congress the central bank will likely need to raise interest rates more than previously expected as it seeks to rein in stubbornly high inflation. Powell said stock investors fleeing when he told U.S. lawmakers earlier in the day that the Fed is prepared to hike rates in larger steps if future economic data suggests tougher measures are needed to control rising prices. The remarks followed recent data showing an unexpected inflation increase in January and an unusually large jobs gain for the month. So the Dow Jones Industrial Average fell 575 points or 1.7% to end at 32,856. The S&P 500 lost 62 points or 1.5% to close at 3,986 and the Nasdaq Composite dropped 145 points to 11,530. Meanwhile, Powell, who will testify again today before the House of Representatives Financial Services Committee, also added that the Fed would not consider changing its 2% inflation target and the job market does not suggest an economic downturn is close. So, hawkish stand? Very much so, and as I said earlier that Friday's data on jobs and on 14th March data on inflation will hold the key to what Mr. Powell does on March 21st and 22nd. Moving on, the country's money laundering laws will apply to trade in cryptocurrencies, the government had said in a notification issued yesterday. The notification reads, the exchange between virtual digital assets and fiat currencies, the exchange between one or more forms of virtual digital assets and the transfer of digital assets will be covered under the money laundering laws. The safekeeping or administration of virtual digital assets and the participation in financial services related to the offer and sale of virtual digital assets will also be covered, the notification added. Extending India's money laundering rules to cryptocurrencies will give authorities greater authority in monitoring the transfer of these assets beyond the country's borders. How do you see this law of money laundering being applicable to money to cryptocurrencies? Well, this is the biggest blow against cryptocurrencies in this country. What it essentially means is that the law enforcement authorities, enforcement directorate under the finance ministry, can actually knock on any doors and say, if you have engaged in a cryptocurrency deal, then please let me know where you got that money and how you invested it. So the earlier notion that cryptocurrency investments can remain out of bounds for the law enforcement agencies, the economic law enforcement agencies, is completely been challenged with this notification. That is number one. Number two, remember that in the budget, the had imposed a tax on cryptocurrency deals. So with the tax on the one hand and the bringing cryptocurrency deals under the money laundering laws, you actually have made cryptocurrencies a difficult commodity to survive, and this is in line with what the government and particularly the Reserve Bank of India believes, and Reserve Bank of India Governor Shaktikant Das has said it several times that it should be banned. It's the government which has been going a little akin to Ponzi schemes. Exactly. So the government of India is actually, taking its own time, and these two steps that I mentioned, one the tax and this money laundering law, in my view, will strike a major blow at cryptocurrencies. And our Prime Minister, along with the G20 leadership, has been pushing for a wider global agreement on dealing with the risks brought on by cryptocurrencies. So this is in line with that. Absolutely. आइए खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं। मूडीज एनालिटिक्स ने कहा है कि भारत की घरेलू अर्थव्यवस्था इसकी आर्थिक वृद्धि के लिए प्राथमिक इंजन है और पिछले वर्ष की अंतिम अवधि में आर्थिक गतिविधियों में आई
कमी तात्कालिक प्रभाव साबित होगी। विकासशील बाजारों के आउटलुक पर अपनी रिपोर्ट में मूडीज ने कहा कि एक वर्ष के आधार पर वृद्धि दर में कमी दिखी है। वर्ष 2021 की दूसरी तिमाही में कोविड-19 के डेल्टा वेव के असर से पहली बार निजी खपत में कमी आने से सकल घरेलू उत्पाद में कुछ नरमी आई। रिपोर्ट में कहा गया है कि हमारा अनुमान है कि पिछले वर्ष के अंत में आई यह कमी तात्कालिक है और मामूली प्रभाव छोड़ेगी। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि अमेरिका और यूरोप में बेहतर विकास होने से विदेशी मोर्चे पर भारत के लिए इस वर्ष के मध्य से अनुकूल प्रभाव देखने को मिलेगा। किन अर्थों में ले हम मूडीज की इस रिपोर्ट को और जो यदि कह लें कि विगत वर्ष के अंतिम अवधि में इसका जो सारांश मैं कहूंगा इसका ये है कि ट्रेड में हमारी जो शेयर है जीडीपी की थोड़ी घट गई है और विश्व का जो मार्केट जो है वो रिसेशन हिट है। यूएस में भी इकोनॉमिक स्लोडाउन कह रहे आ रहे, यूरोप में स्लोडाउन है। तो उसको देखते हुए हमारी अगर ट्रेड अफेक्टेड होती है पर हमारी डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग, डोमेस्टिक इकोनॉमिक एक्टिविटी बरकरार है, तो मूडीज का रिपोर्ट का कहना ये है कि हम जो भारत की अर्थनीति की जो ग्रोथ रेट जो है वो उतनी ज्यादा इम्पैक्टेड नहीं होगी कंपेयर टू अगर हम ज्यादा ट्रेड डिपेंडेंट होते। तो यही एक इसका एक निष्कर्ष, मुख्य सार यही है। So, AKP, in the report, it's also mentioned that the private consumption lagging overall GDP for the first time. How worrisome is that? Well, this is data this is also a lagging data, and this is certainly worrying, and one has to make sure that how consumption picks up. And as I was telling you a little earlier, that for the first time, the third quarter results of Indian companies, the consumption, the sales of companies, particularly in the consumption sector, is actually seeing a rise. Mm-hmm. So I would say that by the high frequency data on corporate results and the GDP data, right now there is a slight variance. One has to keep it under very close watch to make sure that the consumption recovery is as robust as any other economic activity in the country. Moving on, the global crude oil prices traded firm after earlier losses today, driven by fears that more aggressive U.S. interest rate hikes would hit demand, while the market awaited further clarity on inventories. So the Brent crude futures gained 11 cents to trade at $83.40 per barrel. The U.S. crude futures eased 9 cents to $77.49 barrel. It seems the oil is going to be range bound. It will remain range bound, and they will move in this range. And for India, with Russian oil coming in, situation is not that dependent on the West Asian oil. As you know, Russia is now India's single largest supplier of Urals. So India has successfully diversified its supply source. So that, to my mind, will provide a lot of comfort to India's oil economy, at least in the next few months, as long as Russian Urals are available to India. आइए खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और चलें सर्राफा बाजार। दिल्ली सर्राफा बाजार में आज सोने और चांदी की चमक फीकी रही। मांग कम निकलने से सोने का मूल्य 615 रुपए घटकर 55,095 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया। उधर चांदी भी 2,285 रुपए घटकर 62,025 रुपए प्रति किलोग्राम के स्तर पर रह गई। बस यहीं पर एकेबी श्रोताओं की ओर से हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। नमस्कार। Thank you for being with us, AKB. And before we close, the headlines once again. At the stock markets, rising for the third straight day, Sensex gains 124 points, Nifty adds 43 points. Country's money laundering laws to be applied on trade in cryptocurrencies, says the government. And slowdown in India's economic activity will be temporary, says Moody's Analytics. That's all we have in this edition of Market Mantra. Till tomorrow, goodbye. Market Mantra.